Tell me one thing, how many of you have collected all those Chacha Chaudhary, Scooby-Doo and Tom and Jerry comic books during your childhood back in 90s? I think most of us have done that. Hello and welcome to my channel. My name is Dipakshi and I create DIY videos related to fashion, jewelry, accessories and sometimes cartoon. And you are most welcome in this brand new episode of Art Knowledge, in which I'm going to tell you about how you can create your own comic. Comic strips are majorly known for its humor-filled stories, and most of us just love those stories. Lekin if you have ever noticed, nowadays people have started associating political issues, social issues and so many other kind of stories they want to share through these comics, which is I think very good idea. बहुत छोटी स्टोरी में आप पूरी अपनी बात कह देते हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, and still you are able to connect to your audience, which is one of the most important thing. So आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि कैसे आप खुद की कॉमिक स्ट्रिप बना सकते हैं. So without wasting much time, let's just go and watch this video. Before we start, how you can make your own comic strip, उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि exactly comic books होती क्या हैं and comic strips होती क्या हैं और उनकी history क्या है. See, if we talk about what is comic strips and books, they are basically a series of drawing and characters on a paper जिसमें आप छोटी सी शॉर्ट स्टोरी इंसिडेंट वगैरह शेयर करते हैं. एंड सेम इज विद द बुक, बस डिफरेंस इतना होता है कि वो जो स्ट्रिप में होती है एक फॉर्मेट में, वो एक बुकलेट की फॉर्मेट में चेंज हो जाती है. दैट्स इट. And if we talk about the history of comic strips and comic books, the simple thing is back in 19th and 18th century, जर्मनी एंड इंग्लैंड के कुछ न्यूज़पेपर्स में ये छोटी छोटी कॉमिक स्ट्रिप्स ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक पेन से बनाया जाता था और वो रिलीज की जाती थी. विद टाइम क्या कहते हैं, और भी कंट्रीज ने इन्हें आइडियाज को अडॉप्ट किया. एंड प्लस दे ऑल्सो लाइक कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप पहले से ही यूज कर रहा था, इंडिया एंड अदर कंट्रीज दे ऑल्सो अडॉप्टेड द आइडिया. दे लाइक इट, लाइक यू कैन सर्व soft news through these comic strips. And with time they have also realized that कि सिर्फ jokes नहीं, सिर्फ humor stories नहीं, you can also share comic strips related to political issues, social issues and things like we don't talk much in this world, in this society. So you can share your ideas and your storyline through these small short stories and comic strips. So that's how comic strips started in our society. So now comes the question for which I am making this video: how to create your own comic strips. So there are few basic steps you need to follow when you create your own comic strips, and I have divided these steps in 6 very simple steps. So without wasting much time, let's just go and learn what basic steps you need to create your own comic strips. So the step number 1 for creating your own comic strip is creating an idea. Obviously, idea is the seed of any work you're doing. So सबसे पहले whenever you're planning to start a comic strip or a comic book, if you want to create it, you need an idea कि आपकी जो comic strip है या story है किस चीज़ के regarding होगी. You need a short story जिसमें आप कोई भी वो हंसी मजाक से रिलेटेड हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है, या कुछ सेंसिटिव इशू हो सकता है जिससे आप थोड़े क्रिएटिव वे में बोलना चाहते हैं, या कोई भी लिविंग एग्जांपल हो सकता है जो आप शेयर करना चाहते हैं. कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप बहुत ही कम टाइम में लोगों तक अपनी वो स्टोरी, अपना वो आइडिया, अपना काम लोगों तक पहुंचा सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर आइडिया एंड put it into parts कि like this will going to my scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. इस तरीके से करने से, scenes में डिवाइड करने से आपकी जो स्टोरी है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगी और लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा. Step number 2 is draw frames. Like for example, अगर आपकी स्टोरी के 5 सीन्स हैं तो आपको
फ्रेम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वेदर इट्स अबाउट इन द बुकलेट और इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। लेकिन जितने सीन्स उतने ज्यादा फ्रेम्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ट्राई टू मेक इट शॉर्ट सो दैट लोग बहुत जल्दी बोर ना हो जाएं और लोग बहुत से कनेक्टेड रहें। जितनी आई थिंक 3 to 5 frames are enough for any comic strip. उसके बाद अगर आप exceed करते हैं then your story should be so powerful so that people find them those story related so that they can feel connected to the story. अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा लंबे फ्रेम्स होंगे, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी होगी तो लोग बोर हो जाएंगे। ऑडियंस शायद एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, लेकिन उसके बाद वो शायद इतना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि वी लिव इन अ डिजिटल एरा नाउ, सो यू डोंट नीड टू ऑलवेज नीड टू मेक दीज कॉमिक स्ट्रिप्स on paper and pen. If you're a beginner you should, but if you are a pro and know how to do it on a digital manner, I think that will be more beneficial for you, because most of the people are most of the audience is on digital platform right now, and it will be easy for them to watch your work and share it with your loved ones. Now comes the step number 3. Step number 3 is use very easy shapes to create your character for your comic strip, like basic rectangular, square, circle types of shapes, so that आपको बनाने में आसानी हो। नो, हर कोई इंसान पिकासो नहीं होता कि बहुत अच्छी ड्राइंग बना ले, तो बेसिक शेप्स हर कोई बना सकता है। तो इवन इफ यू आर नॉट गुड एट ड्राइंग, you can create your own comic strip with those characters. First of all, choose your characters कि आप उस स्टोरी में, if it's about a girl and his teddy bear, so you need to make a story about, you need to create characters related to girl and the teddy bear, her mother, father and other things. And when you are going to create characters using those shapes, it will be easy for you to make those artwork in other frames as well. Because अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपने एक बार स्केच बना दिया, उसको दोबारा नहीं बना पाए, तो इट विल लूज इट्स रेजोनेंस, सो दैट लोग पहचान नहीं पाएंगे कि वो सेम कैरेक्टर की अलग फ्रेम में बात हो रही है। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप इट सिंपल बट वेरी अप्रोचेबल। नाउ कम्स स्टेप नंबर 4. बेसिकली स्टेप नंबर 4 में आपको ये करना है कि when you are done creating your character, now it's time to add dialogue, speech, words. Have you ever noticed those small bubbles or square shapes we create in creating comic books? वो basically use की जाते हैं dialogues और words लिखने के लिए with exclamation marks with. And one more important thing is whenever you use dialogues or speeches in these comic strips, always remember to use grammar, punctuations, exclamation mark, question mark very precisely, because these kind of signs help audience to understand your speech and dialogues way more better. अगर आप plain उसको लिख के छोड़ देंगे without any full stop, exclamation mark, क्वेश्चन मार्क, तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं। तो ये मार्क्स जो होते हैं, जो पंक्चुएशंस होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आपको अपनी बात और बेहतर तरीके से कहने में। सो ऑलवेज रिमेंबर टू पुट दोज लेटर्स एंड वन वर्ड्स टू मेक योर स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। Now comes the step number 5, which I think is very important whenever you are creating your own comic strip, which is adding details to your work. For example, जैसे मैंने आपको पिछले section में बताया कि if it is a story about, I've given an example कि if it is a story about a girl and a teddy bear, तो always remember कि आप कैसे उसमें details add कर सकते हैं by adding those small फॉर एग्जाम्पल अगर रूम का सीन है तो लड़की का रूम कैसा होना चाहिए, बच्चे का रूम कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे से कार्टून कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो आपके जो काम है उसको एनहेंस करेंगे और आपकी स्टोरी को एनहेंस करेंगे अगर आप छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखेंगे कि कैसे आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। Now let's talk about step number 6. This is one of the final process we use in a comic strip. Basically,
there are two types of creating your comic strip. One is pen sketching, another one is colorful one, like black and white and colorful. So in a initial stage as a beginner, I will recommend you to use black pen, black gel pen, ball, sketch pen to create your comic strip, because बहुत easy होगा आपको sketch करना, बहुत exhausting नहीं होगा. Plus if still you want to make it a bit colorful one, then you can use sketch pen, brush pens. They will give more bright look to your picture. And if you are going for colorful comic strip, always remember to use primary colors which are very eye-catchy, so that your comic should be and could be eye-catchy and pursue people to watch it or to read it. And if we talk about the digital one, they have different color palette which you can use as per your choice, but digital is for someone who's very pro at using digital software. So as a beginner, I will recommend you to make a comic strip on a paper with the help of black pen. That's it. In this last segment of this episode, I would like to share few ideas for comic strips which you can have. For example, you can talk about your picnic day and school days, travel comics, friendship, fairy tales, superheroes, family, music, the future, anti-bullying, endangered species, your beach day, or your summer vacations. Like, there are endless topics you can use and ideas you can use to create your own comic book. So these are few of them which you can take inspirations from or create your story around these ideas. I hope this video was very helpful for you, and if you're looking to make your own comic strip soon, then this video will going to be a perfect helping tool for you. And if you like this video, then you know what you have to do. You have to subscribe to my channel, tell us about experience in the comment section below, share with your friends and family members. Along with that, don't forget to subscribe to my channel. We'll see you until next time. Till then, tata, bye bye. See you.